बहुत बहुत आभार आप सभी का। इंडिपेंडेंट रिसर्च एथिक्स सोसाइटी की आयुष समृद्धि ज्ञान गंगा के 2618वें पड़ाव पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम आज बिलेटेड माउंटेन डे, माउंटेन क्लाइंबिंग डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसा कि हमारा सिद्धांत और हमारी परंपरा है, हम प्रत्येक टॉपिक को हमारे स्वास्थ्य से, आयुर्वेद से, आयुष से रिलेट करने का प्रयास करते हुए समाज के हित में क्या बेस्ट हो सकता है उसका उसकी कोशिश करते हैं। माउंटेन्स फॉर हर्ब एंड हेल्थ। हम जानते हैं कि पहाड़ एक विराट व्यक्तित्व है, एक हस्ती है उसकी विराट। और वो हमें केवल देवता है, देवता माने देने वाला। क्या क्या हम उससे नहीं निकालते, जड़ी बूटियों से लेके मिनरल तक सब कुछ हमें पहाड़ में मिलता है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मैं डॉक्टर मृणाल आकरे जी का स्वागत करता हूं राजकोट से। डॉक्टर सुपर्णा सनन मुखर्जी मैडम का स्वागत करूंगा बोलपुर से। और डॉक्टर सैकत बसु जी का स्वागत करूंगा वेस्ट बंगाल कनाडा, दोनों जगह से। थैंक यू वेरी मच। अब मैं द्रव्य गुण के निष्णात डॉक्टर मृणाल आकरे जी को सादर आमंत्रित करता हूं उनके विचारों के लिए। आराम से आप पे 20 मिनट का समय है। हेल्थ और हर्ब फ्रॉम माउंटेन्स, डॉक्टर आकरे, थैंक यू प्लीज सर। टेक। थैंक यू सर। हेल्थ एंड हर्ब मीन्स एक यूनिक टॉपिक है हो गया है आज तो, कि जैसे माउंटेन्स से हेल्थ भी और हर्ब भी। जनरली पहले ऐसे होता था कि अभी भी होता है कि जो एलोपैथिक डॉक्टर मोस्ट प्रोबेबली वो कोई बीमार व्यक्ति हो या ज्यादा कुछ हो तो उसको कहता है कि आप कुछ दिनों के लिए हवा पालट करके आ जाए, हवा पलट करके। तो हवा पलट करने के लिए कहा है तो ने लोग सोचते हैं कि जाना कहाँ है। तो ऐसे जगह ही जाना है कि जहाँ पे हिली वेदर हो या हिली क्लाइमेट हो, ऊंचाई पे रहे। तो ये ऊंचाई पे या फिर डॉक्टर का जो कहना है एलोपैथिक की ऊंचाई पे या पहाड़ों पे क्यों जाना है। तो जनरली पहाड़ों पे जो होता है वहां पे एक देखा गया है कि ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो थोड़ी हेवी होने की वजह से नीचे नीचे बैठ जाती है। अगर पहाड़ों के जंगल भी है तो भी वहां पे इतना ज्यादा हमें जो पॉल्यूटेड गैसेस है वो उतने नहीं मिलते हैं। सो दूसरा एक है कि जो हिली रीजन पे रहने वाले लोग हैं वो कंटिन्यू चढ़ते उतरते रहते हैं, जिसके वजह से उनके हार्ट, फिर मसल्स और बाकी के जो बॉडी कंपोनेंट्स है वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी होते हैं। ये हम लोग देख सकते हैं कि जैसे अगर हम लोग है ना हिमालय में के इसमें चले जाए, हिमाचल प्रदेश है या उत्तराखंड है, तो वहाँ के लोग कितने हेल्दी फिट बॉडी रहते हैं। आपको थोड़ा बल्कीनेस वगैरह उनमें नहीं दिखता है। एकदम फ्रेश ऑक्सीजन की वजह से रेगुलर है ना ऊंचाई पे नहीं या चढ़ना उतरना होने की वजह से उनकी हेल्थ बहुत ही अच्छे से मेंटेन रहती है। तो ये पहाड़ों का है ना वो पता होने के कारण जो एलोपैथिक डॉक्टर्स है वो अपने मरीजों को या है ना जो बीमार व्यक्ति होते थे उनको हवा पालट के लिए हिमालयों में या कहीं पहाड़ों पे जाने के लिए या पहाड़ी रीजन पे जाने के लिए बोलते थे। दूसरा एक है कि अगर जब हम लोग आयुर्वेद पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमारे इसमें कहा गया है कि वनस्पतियां कहाँ से लेनी चाहिए, तो उसका एक आंसर है कि उत्तर दिशा होनी ही चाहिए। अब अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ पे उत्तर दिशा में हम हिमालय पर्वत है, यानी पहाड़ ही है। तो इन पहाड़ी रेंजेस से हमें मेडिसिन लेनी होती है जो उत्कृष्ट गुणों से युक्त ऐसी बताई है। जनरली उत्तर दिशा या हम लोग दोनों तरह से ले सकते हैं कि जो भी वनस्पति है उत्तर साइड से या उत्तर दिशा यानी जहाँ पे पहाड़ी एरिया है या हिमालय है। और अगर देखा जाए तो हिमालयन रेंजेस पे एन नंबर ऑफ बहुत से अपने रेयरेस्ट ड्रग्स
बहुत ही मिराकल ड्रग्स, ऐसे बहुत से चीजें मिलते हैं हमारे आयुर्वेद शास्त्र में। तो अभी मैं बताऊंगा कि कुछ ड्रग्स का उल्लेख, और इसके अलावा ऐसे और भी है कि जो मैंने जब हम लोग यानी जैसे पहाड़ों पे गए या फिर उत्तराखंड की जब हमने ड्रग टूर की, तो वहां पे अलग अलग वनस्पतियां हमें कैसे मिली। तो अगर हम लोग बात करते हैं हेल्थ के इश्यूज से, तो आजकल सबसे ज्यादा स्ट्रेस फैक्टर है। और दूसरा है कि बहुत से लोगों को इंसोम्निया भी होता है। तो हमारा सबसे बेस्ट और मिराकल ड्रग है कि जैसे जटामांसी। ये जटामांसी हिली रीजन में ही या पहाड़ों में ही होता है, उसको वहीं से हमें लेना है। अगर ये देखा जाए तो जनरली जो सी लेवल से एक 1000 फीट से लेके तो 3000 फीट के बीच में ये जटामांसी बहुत अच्छे से हो जाती है, और यहीं पे हमें मिलती है। जो जिसका लैटिन नेम या बॉटनिकल सोर्स है नॉर्डस्टिक जटामांसी। इसको जनरली हम लोग इंसोम्निया के ट्रीटमेंट के लिए हो गया, डिप्रेशन के लिए हो गया, स्ट्रेस कम करने के लिए हो गया, तो उन सब चीजों में हम लोग इसको यूज करते हैं। जनरली ये पित्त कफ हर बताई गई है। मेद्य भी है जटामांसी, अगर हमें चाहिए तो मेद्य रक्त प्रसादन भी करती है। और मन यानी हमारा जो मन है, मन को भी ये शांत करती है। मॉडर्न के हिसाब से इसमें बहुत से न्यूरो प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स है और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी हमें कहीं ना कहीं बॉडी का स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट ऐसी मेडिसिन है जिसको हम लोग बहुत से प्राणवय स्रोतस व्याधियों में यूज करते हैं। तो वो है कुष्ठ, जिसको हम ससुरिया लापा भी कहते हैं। तो ये भी पहाड़ी, जहाँ जितना ज्यादा एल्टीट्यूड होगा उतने ज्यादा एल्टीट्यूड पे ये हमें मिलती है। तो इसका भी यूज हम लोग श्वास कास में करते हैं। तो अगर ये मॉडर्न पर्सपेक्टिव देखा जाए तो इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एंटी माइक्रोबियल और ब्रोंकोडायलेटर एक्टिविटीज दिखाते हैं, साथ साथ में एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटीज भी दिखाते हैं। तो ये भी जो प्लांट है ये भी हमें हाई एल्टीट्यूड या पहाड़ों से ही हमें मिलता है। नेक्स्ट है कुटकी या कटुकी, जो हम लोग पिक्रोराइजा कुरो। तो इसे भी सबसे बेस्ट हमारे इसमें जो लीवर टॉनिक कहा गया है कि जो हम लोग तो यूज करते ही है, लेकिन जो एलोपैथिक डॉक्टर्स है आज वो भी लीवर टॉनिक करके लीवर प्रिपरेशन में कटुकी का यूज, या उनके टेबल पे भी जो लीवर प्रिपरेशंस होती है उसमें कटुकी मिलेगी ही मिलेगी। तो हम लोग कटुकी का एज अ यकृत उत्तेजक करके यूज करते हैं, पित्तहर करके यूज करते हैं, पित्त रेचक है, और ये भेदन और कृमिघ्न कर्म भी दिखाती है। जनरली कामला हो, यकृत विकार हो, इसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। मॉडर्न पर्सपेक्टिव देखे जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, तो ये इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग कंपोनेंट्स इसमें पाए गए हैं और हिपैटो प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स। तो इस काम के लिए भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, जिसको बाल भेषज या शिशु भेषज कहा गया है कि जो छोटे बच्चों के लिए एक बहुत ही मिराकल हर्ब है, अतिविषा, एकोनिटम हेट्रोफाइलम। तो ये भी हमें जितना हाई एल्टीट्यूड होगा वहीं से हमें ये एकोनिटम के जितने भी स्पीसीज है, फिर वो अतिविषा हो गई या वत्सनाभ हो गया, तो ये हमें हाई एल्टीट्यूड पे ही मिलते हैं, अबव 3000 5000 फीट के ऊपर में। और वही क्लाइमेट जहाँ पे थोड़ा ड्राई एरिड ठंडा मौसम हो, ऐसे ही मौसम में ये अतिविषा हमें बहुत ज्यादा ब्रह्मांड में मिलती है और बहुत अच्छी मिलती है। तो इसे भी है ना, छोटे बच्चों के ज्वर हो गया, कृमि हो गई, बल प्रोवाइड करने के लिए, फिर कास हो गया, या कोई भी उदर रोग हो गए, तो उन छोटे बच्चों में हम लोग इसको यूज करते हैं। और इसके अंदर होने वाले जो ग्लाइकोसॉइड्स होते हैं या एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं वो एंटी डायरियल और एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट्स दिखाते हैं। इसके साथ में जैसे मैंने अभी वत्सनाप कहा था, तो वत्सनाप एक्रोनिटम फेरोक्स ये भी है, हाई एल्टीट्यूड में मिलता है, जिसको हम लोग मीठा विष कहते हैं। और ये पॉइजन होने के बावजूद भी, इसमें टॉक्सिन्स होने के बावजूद भी हम लोग जब इसको शोधित करते हैं, तो ये भी हमारे ज्वर के लिए और मसल्स के डिसऑर्डर्स में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं।
तो ये भी एक हमारे लिए मिराकल ड्रग है कि जिसका विष होने के बावजूद भी हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं। फिर नेक्स्ट है बहुत ही बढ़िया सा एक ड्रग है कि जो प्रमेह की चिकित्सा में, जनरली शास्त्रों में तो उसे प्रमेह की चिकित्सा में बताया गया है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया अगर है ना शिलाजीत का नाम ले तो ये एफ्रोडियासिक करके ही देखा जाता है कि शिलाजीत अगर लेना है तो वो शुक्रवर्धन कर्म करने के लिए ही इसका यूटिलाइजेशन देखते हैं। बट इसको हम लोग वात और कफ को कम करने के लिए, प्रमेह के लिए, बल देने के लिए इसका यूज करते हैं। और इसमें बहुत ही ज्यादा ये जो शिलाजीत होता है फुल्विक एसिड में बहुत ज्यादा ये रिच होता है, और जिसके वजह से ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज दिखाता है। नेक्स्ट इसके साथ साथ में है कि जैसे बहुत से अलग अलग जो मेडिसिन्स है, जैसे देवदार हो गया, दारू हरिद्रा हो गया, तो ये भी हमें पहाड़ों के ही जो क्लाइमेट होता है वहीं पे मिलते हैं। देन उसके बाद में चिड़ हो गया, शाल हो गया, सरज हो गया। तो ये भी जो मेडिसिन है या ये भी जो प्लांट्स है, जितनी हाई एल्टीट्यूड होती है उसी हाई एल्टीट्यूड में ये प्रॉपर ग्रो अप होता है। और अगर दूसरा ये देखें कि अब जैसे मैंने कहा था कि आयुर्वेद में कहा है कि उत्तर दिशा से ही हमें मेडिसिन लेनी है, तो एक और एक हम लोग सोच सकते हैं कि जो ये पहाड़ी रीजन्स होते हैं या हिमालयन रेंजेस है, या जो भी हमारे यहाँ पे नीलगिरी के पहाड़ हो गए, फिर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला हो गई, अरावलीज हो गए, देन गिरनार की पहाड़ियां हो गई, तो इन सब एरियाज में जो है ये पहाड़ी रीजन, तो वहां पे एक तो है कि हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से वहां पे पॉल्यूशन बहुत ही कम होता है। पॉल्यूशन कम होने के वजह से जो स्पीसीज है या जो ये प्लांट्स है, हमारी मेडिसिन है, इनमें जो पॉल्यूटेंट्स है वो बहुत कम एब्जॉर्ब होंगे, जिसके वजह से हमें एक बेस्ट पोटेंट मेडिसिन मिल सकती है। दूसरा कि जो ये एरियाज होते हैं ये यूनिक जोन्स होते हैं, जिसके वजह से जो प्लांट्स के अंदर होने वाले गुण है उन गुणों का प्रॉपर जो होना चाहिए गुण, तो वो हमें प्रॉपर अमाउंट में मिलते हैं। देन उसके बाद में जो इनकी वीर्य है और सवीर्यता अवधि है वो भी हमें बहुत ज्यादा और लॉन्ग मिलती है। देन इनके जो कर्म है ये प्रॉपर कर्म भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जितने भी हमारे आयुर्वेद में बोले हैं या जो मेडिसिनल प्लांट्स है वो हमें प्रॉपरली हिमालयन रेंजेस से और प्रॉपर क्वालिटी और क्वांटिटी में भी मिल सकते हैं। ये तो आयुर्वेद में बताए हुए कुछ हर्ब्स हो गए जो हमें हिमालय रेंजेस से या फिर पहाड़ियों पे से मिलते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे मेडिसिन है, जैसे अभी हमने जब उत्तराखंड गए थे तो उत्तराखंड में एक ब्रॉन्ज करके प्लांट आता है जिसमें लाल रंग के फ्लावर्स आते हैं। तो ये ब्रॉन्ज करके हमारे आयुर्वेद में कहीं पे भी उसका उल्लेख नहीं, मे भी हो सकता है कि ये मलेशिया से एक्सोटिक ड्रग या नेपाल से एक्सोटिक ड्रग हमारे यहाँ पे आया हो, और ये शायद से ही वहाँ के लोकलाइट्स लोगों को पता है। इस ब्रॉन्ज का वो लोग वहाँ पे इतने अच्छे से यूटिलाइजेशन करते हैं कि हार्ट के लिए एज अ टॉनिक उसका जो शरबत बनता है वो एज अ हार्ट टॉनिक करके वो लोग यूज करते हैं। देन उसके बाद में आजकल जैसे एक कहावत हो गई है कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो एप्पल का भी जो प्लांट है या एप्पल की जो या ऑर्चिड फैमिलीज के जो मोस्ट प्रोबेबली जैसे प्रूनस वेराइटीज जो हो गए जिसमें एप्पल हो गया, एवाकाडो हो गए, देन उसके बाद में सॉरी पीचेस हो गए, एप्रिकॉट्स हो गए, तो ये जो प्लांट्स है इनको भी थोड़ा सा हाई एल्टीट्यूड और हाई एल्टीट्यूड में जैसे ना पहाड़ों के ऊपर जो सॉइल होती है थोड़ी सी पत्थरीली, थोड़ी सी है ना सॉफ्ट, और जो पानी होल्ड करके रख सके, तो ऐसे ही एरियाज में ये प्लांट्स होते हैं। कि आज एक ऑल ओवर इंडिया में एक है कि एप्पल यानी बहुत ही मीन्स एक स्टेटस माना जाता है कि कोई भी अगर बीमार है तो उसको पहले एप्पल खिलाओ। हालांकि हमारे आयुर्वेद में वो दिया नहीं कि एप्पल खाना चाहिए करके, हमारे इसमें तो दिया है कि श्रेष्ठ फ्रूट जो है वो अनार है, दाड़म को बताया गया है।
द्राक्ष को बताया गया है। बट आज एक यूनिक वे से तो ये एप्पल की जो खेती है वो उतने ही हाई एल्टीट्यूड पे की जाती है। तो एप्पल के भी अपने अपने प्रॉपर्टीज है, जो रिच इन विटामिन होता है, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, तो इसीलिए उसको भी रिकमेंड किया जाता है। देन इसके अलावा भी हम लोग अगर पहाड़ों में देखें तो बहुत से मिनरल्स, जैसे अभी सर ने कहा था कि पहाड़ों पे मिनरल्स भी बहुत होते हैं। तो एक शिलाजीत जैसे है कि वो रेजिन टाइप का, जो पहाड़ों से स्पेसिफिक आज भी एक है ना, शिलाजीत जो है वो एक कंट्रोवर्शियल टाइप का है कि कोई कहते हैं कि कोई स्पेसिफिक प्लांट्स है कि वो प्लांट्स के रूट्स में से निकलता है, कोई कहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक केमिकल एक्शन की वजह से पत्थरों में से वो निकलता है। तो ऐसे ही अलग अलग जो मिनरल्स होते हैं वो भी हमें पहाड़ी एरिया से मिलते हैं, जिसको हम लोग रस शास्त्र की बहुत सी मेडिसिन है, भस्म है, वो बनाने के लिए यूज करते हैं। देन हमारे यहाँ पे एक अगरू करके प्लांट बताया गया है कि जो अगर आप कहीं पे भी है ना नॉर्मल लैंड पे उसको ग्रो करोगे थोड़ा सा ग्रो होगा, लेकिन वो प्रॉपरली जो अगरू डेवलप्ड होना है फंगस के कारण, जो अगरू डेवलप्ड होता है या अगरू की लकड़ी जो जब फंगस से है ना संक्रमित हो जाती है उसके बाद में उसमें जो स्मेल या फ्रेग्रेंस डेवलप होता है, वॉलेटाइल ऑयल्स डेवलप होते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक क्लाइमेट है जो उसको हिमालयन रेंजेस के ही क्लाइमेट में मिलता है और वहीं पे वो लकड़ी प्रॉपरली बनती है। तो ये भी एक कॉस्टली है जो मेडिसिन में हम लोग जिसको ज्वर के लिए और सुगंधित कर्म करने के लिए या शोधन करने के लिए भी उसका यूज करते हैं। तो अगर हमें जैसे देखा जाए कि एक प्लांट्स की हेल्थ या ह्यूमन हेल्थ दोनों अगर देखने हैं, तो हाई एल्टीट्यूड पे हम लोग जैसे जाते हैं, बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड नहीं, एक जो ऑक्सीजन लेवल जो होती है, जितना ऑक्सीजन लेवल पे हम लोग सरवाइव कर सकते हैं एट अराउंड 3000 हो गया या 4000 5000 तक के हो गया, तो मोस्ट प्रोबेबली 7000 तक के जो है, तो वहां तक के हमें जो ये हर्ब्स भी है वो भी बहुत अमाउंट में या बहुत एन नंबर में अलग अलग स्पीसीज और वेराइटीज में मिलती है। और साथ साथ में हमारी हेल्थ भी उसी तरीके से इन हाई एल्टीट्यूड्स पे बहुत अच्छी होती है। सेकेंडली अभी जैसे है कि उत्तराखंड में ये थोड़ा टाइम पीरियड होता है, उत्तराखंड हो गया या दार्जिलिंग साइड हो गया, मेघालय साइड हो गया या हिमाचल प्रदेश में, तो वहां पे ट्रैकिंग के लिए भी बहुत से अभी ग्रुप्स जाते हैं, ट्रैकिंग के साथ साथ हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए या हेल्थ प्रमोशन के लिए। तो वहां पे वैलीज ऑफ फ्लावर्स हो गए, फिर उसके बाद में मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, तो उसके भी कैंपेन्स चलते हैं जिससे लोग आजकल बढ़ते जा रहे हैं कि पहाड़ों के तरफ जाओ तो हमारी हेल्थ जो है वो हेल्थ बनी रहे। तो स्पेसिफिकली है कि मोस्ट प्रोबेबली अगर हमें हमारी हेल्थ अगर चाहिए या हमें ऑक्सीजन लेवल हमारे बॉडी में मेंटेन करना है, जैसे दिल्ली वगैरह साइड में होता है अभी कि वहां पे एक ऑक्सीजन थेरेपी चलती है कि 15-15 डेज में या ऐसा कुछ है कि आपको अगर आपकी बॉडी मेंटेन रखनी है तो एक एक महीने में या 6 महीने में वो ऑक्सीजन सेंटर पे जाते हैं जिसमें ना प्योर ऑक्सीजन दिया जाता है। और बाद में वो जो है कि एक रिजुविनेटिंग फीलिंग आती है। तो आर्टिफिशियल ये ऑक्सीजन लेने से अच्छा है कि जो नेचुरल ऑक्सीजन है जो पहाड़ों पे मिलता है उसे हम लोगों ने लेना चाहिए। वहाँ की जो फ्रेश हर्ब्स है, वहाँ के वनस्पति है, वहाँ के मेडिसिन है, उनके साथ हम लोगों ने नाता जोड़ के रखना चाहिए। तो एटलीस्ट इन अ ईयर हम लोग अगर पहाड़ी एरियाज में अगर जाते हैं तो हमें पूरे साल के लिए एक अच्छी खासी एनर्जी मिलती है। इतना ही कह के मैं अपने पानी को विराम देता हूँ। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत आभार मृणाल जी, बहुत बहुत आभार। आपने बड़े अच्छे और रोचक अंदाज में सभी को प्रस्तुत किया। बहुत बहुत आभार आपका। मैं अब डॉक्टर सुपर्णा सन्याल मुखर्जी मैडम को सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर सुपर्णा सन्याल मुखर्जी मैडम, वेलकम मैडम, वेलकम। Very good evening for the all dignitaries over here. It is really a very good momentum to share on this platform. The today's topic is very important and which emphasize on the current juncture
how we are surviving in this world and what is the benefit, especially the maintaining the herbs into the healthcare system. Herbs are very important because herbs, it is the time immemorial. The herbs is continuing for our daily livelihood sustaining. Mountain herbs are also very important for the production of the medicines. At the same time, the production of this, the healthcare system and the sustainability. In the case of the Sustainable Development Goal 14, it is emphasized on that. I can say and I can also can share some views on these, especially the mountain herbs, like the Tibetans. The Tibetans, those who are residing in the Tibets, and they are having the medicinal plants and the Tibet-oriented medicinal plants, and they are surviving in the nature. They are surviving in this geographical area and geographical territorial niche. And on the basis of their geographical sustenance, there is the medicinal plants are sustaining and surviving and also growing for the betterment of the human beings, not only the human beings and animal kingdom too. It is quite obvious that the each and every parts of our earth, there is the plants kingdom is related with the animal kingdom. Those who are animals are surviving with the plants kingdom, those plants are also very important parts of this the animal kingdom. So that's why it is the symbiotic relationship which is maintaining in the high altitude, the mountains, then the Himalayan regions, then the Tibetan regions, all the parts of the mountaineers, it is also very important for that. Those Tibetans, when what has happened? Those Tibetans are getting down from their territorial niche just because of the scarcity of food and the socioeconomic pattern, rare socioeconomic pattern, and the economic destabilization, and they have to push back in the, their sustainability, and they are not surviving on this particular places. That's why they have to come down. So they, when they have come down from the high altitude area, they are surviving in the middle and lower and lower path of this the Himalayan region, like the Darjeeling, then the Sikkim, then the Bhutan, then the other parts of this the surrounding areas. They are surviving, started surviving. What has happened? Because they were habituated with the medicinal herbs which is available in the Tibet plateau, but when they have come down to this the Darjeeling section and the Sikkim section, those herbs are not available. So habituation of the herbs and the habituation of the geographical territorial niche has been changed, and simultaneously they are suffer from this you know diseases, and those diseases they are not habituated enough because pattern of diseases and pattern of lifestyle is quite different from the others. Basically, the palm trees, which are also available, and the akhroat, which is also very important parts of the the beets are the also important. Pines are also there. Are various types of pines are also found, and these are also very important for them. But they, instead of that, they are getting tea in the Darjeeling region. But they started surviving with those particular herbs, the seeds of the teas and the other, available herbs which are also available in this Darjeeling plateau. So they are also started surviving. What has happened for that? So their health condition is deteriorating. So it is very important for that to maintain the health status and health sustainability. So the people, those who are surviving in the high altitude, the mountain areas, they should be practice the taking the other ways, the other way around the earth, and this other way around the medicinal herbs and with the plants.
So, what they can do nowadays, it is also chemical reaction and the chemical procedures is started. And on the basis of this chemical procedures, there is the Ayush also developed in the chemical productions. So, those herbs are also were available in the high altitude and high mountain region, those herbs, and they collected from there and they are prepared the chemical products. At the same time, those herbs, though the temperature and the same time the geographical conditions, if they can produce and if they can prepare the farmhouse with that particular temperature and that particular atmospheric situation, then those medicine, those herbs also be survive in the Darjeeling area. So it is depending upon the science and technological orientation. But if we can take the restoration of those medicinal plants, that is very important part of our country. At the same time, the people, those who are surviving in the mountain areas. So herbs are very important. Like 40,000 herbs are also abolition. And it is noticed that those evolution herbs are also very important for the people at large. Today itself, there is a very good news which has come in the Calcutta University. One scholar like Dr. Arnob Parul, who has found it out, one bee that is the rare species, not only the rare species, that bee is the first time which is surviving in this earth. And there is no other species has formed. That is the only one species which he has found it out. And this research has been acclaimed by the United States and the UK. All have checked it out in the laboratory process, and they said yes, it is important, and yes, it is rare, and the first time it is surviving in this world. So this bees, he was found it out from the Orisha forest area. So that's why the surviving nature is the best survivor, and nature is allowing us to survive in this world. That's why we are surviving. So each and every plants and each and every herbs in the mountain region, the plateau and this other parts of the country is very important. So we have to restore it, and Ayush has the main responsibility to restore it. That's because of the Ayurvedic medicinal treatment, and the medicinal plant restoration is very important part for the research and development. So that's why we can, if we can develop it, then we can develop our and we can support our people at large, and we can develop our medicinal process too, and the healthcare system. Thank you very much. Thanks for giving me such an opportunity. Thanks a lot. Thank you very much, madam. Thank you very much. Now I would like to invite Dr. Saket Basuji. Welcome, Saket ji. Welcome. Thank you, Sharma ji. It's a pleasure to join your platform. But before I start, I would like to extend heartiest congratulations to Professor Suparna Sharma ji. Sanyal ji is because she has received her DSc degree today. She just received the letter of Doctor of Science for her monumental contribution of 25 years of research. So thank you, madam. Congratulations. Congratulations. It is a pleasure for madam because of her dedicated research for such a long time. And finally, the good news has come. So heartiest congratulations to madam. I do not know whether Thank you madam very is, much. madam is still on the platform. Okay, madam, heartiest congratulations to you. We are Thank very you. proud of Thank you. you. Thank you. Please continue your good work. Yes, yes. Thank you very much. Thanks. Thank you. Thank you. So with this, I like to continue to say that India is definitely, as a country, harboring 1.4 billion people's population, is a substantially large country that has contributed and provided and restored and connected us for a long time. There were many who thought that post 1947, when India started with a divided border, a country separated due to religious hatred and a destabilized economy, many thought that over the time it will decentralize into various states and disorganize. No matter, there has been many challenges that the India has faced, and the subsequent governments of India has gone through failures and successes.
But one of the greatest strengths of the Indian unity is that 78 years since India started the journey as an independent nation, even today, what we see and find is that the country has stayed together as one unit, which is a humongous task compared to the unfriendly neighborhood that India had, provocations that it has received from various countries and quarters, various non-cooperation from one of the largest, like United States and other parts where for a long time did not contribute anything to India or supported Indian cause and movement. They were more forced towards focused towards Pakistan and their religious divides and stuff. So with the help of Soviet Union to some extent, the India has established itself into a giant economy. And today, around the world, there is no country that can ignore the great Indian market and the opportunities that India has provided, the technical personnel that India has produced over these years, and how many of them are serving in foreign countries in various capacities. If we look into the various CEOs of famous multinational companies around the world, a large number of them comes from Indian background, and many of them have their education from the Indian Institute of Technology, which was once established under the leadership of Jawaharlal Nehru in the format of the Massachusetts Institute of Technology. So even today, our population has increased. There are many challenges that we face with respect to health infrastructures, education, distribution of wealth, the rationing system, where our country have become rich for the very rich and also poor for the many poor. But it must be said, over the last 20 years, the government has done exemplary good job in bringing out millions of people out of poverty. So these are humongous tasks. The country has stayed together as one unit, is irrespective of the huge difference of religion. It is a highly diverse population with so many languages, so many creeds, culture, caste, so many dialects that is spoken, about 545 dialects, and so many languages, is because India is considered the third largest linguistically diverse, which means the most diverse country with the language resources that is available. We have a huge resources of forests, our tribals or people of the First Nations, and there are various communities belonging to various religion, traditional faiths, practices that has stayed together into one country for a long time. A stable military forces and a stable democracy with all its limitations and such challenges has stayed together and kept the nation as one. With respect to pharmaceuticals, information technology, genetic engineering, biotechnology, and other areas, the country did make substantial progress. Today, India is considered an important tourist hub. Not only people from around the world are coming to see India in its new glory and new form, but there are people who are from India who are also visiting other countries and stuff. So visiting Europe, visiting North America, USA, Canada, Australia, as one point of time, was something quite unheard of in the Indian economy. But today, as the economy has improved, as the country has led its way into the galaxy of the top 10 or 15 nations of the world, where India has made huge progress, it must be said that the country has been successful in pulling together, irrespective of the huge challenges, the wars, droughts, famines, and other humanitarian crises the country has moved through. And the greatest pride, I would say, that even after the COVID-19, while the rest of the world has taken the brunt of the economy and are still struggling to get out of the COVID-19 downgrade economic impact that has impacted their economy, India, I would say, has done far, far better compared to other countries. Not only provided vaccines to other countries at a cheaper rate, they have supplied material resources for many countries which have survived because of the great support that the Indian government has extended. So thus it is important to mention that whether it is industry or agriculture, the country has expanded far and wide. Indian products, just like China, are being sold all over the world. And in many cases, India is standing up as a formidable challenge for the global economy of China, which has made major progressive steps into various countries.
20, 25, or 30 years back, when I was a student and came to North America, if you look into any newspaper, there is always a paper on the international news, and that international news used to be dominated by United States and China at that time, and the rest of the world. Once and here there could be a news from India. But even if you look into the newspapers across USA, Canada, and other countries in the European Union, you will see the international section always has news on various progress, development, economic projects, etc., being signed across India, and how the country has progressed and stayed together as one unit. So nonetheless, with a staggering huge population, India has struggled extensively to survive, but at the same time, it has been able to stand up on its feet and had established premier institutes that has helped the country to flourish, whether it is space research in ISRO, the IITs, the Indian Council for Agricultural Research, Council of Scientific and Industrial Research, and various other organizations such as the zoological, botanical, anthropological, archaeological, and geological surveys that has looked upon the natural resources and other cornerstones of the country and provided the maps, the distribution of the population, our vegetation, our minerals that are distributed, and how this country has evolved over thousands of years to make into this unique country of culture, which is a place of diversity, unity, with a place of unity in diversity, with so much diverse groups, so many different languages. The country has been able to pull together as a one nation is a humongous challenges. There has been many cases of terrorist infiltration attacks and other challenges that India has faced from now and then. Irrespective of these challenges, the country has even been able to stabilize the economy as well as the political landscape, and has moved forward with their agenda, which has placed India on the global map. Even with respect to tourism, there are many hot areas in India now that are visited by international tourists, and there are many places that has been declared as World Heritage Sites. The land with four religions that has originated from Hinduism, Buddhism, Jainism, and Sikhism is a land of faith. All the major religions of the world come and live in a forest with India, but at the same time, there are differences, there are challenges, there are tensions among the communities. But I would say, irrespective of all odds, the country has moved forward quite well and has been able to hold together the integrity of the nation with such wide diversity that is not seen in any part of the world other than this country. And it is extremely difficult to rule over this country with such a diversity on faith, opinion, culture, religion, tradition, history, that it is quite challenging that this country could stay together for such a long time. So long live India. It has gone through many challenges. It will possibly be coming across many more challenges in the future. But because of the unity of the people and how the people of India has walked towards in establishing one integrative nation, and that has helped the population with respect to education, quality life, enrichment of their social life, as well as their cultural life, and money has further pushed through and boosted the economy. So there has been many challenges with respect to legitimacy, fights with other countries, or destabilization attempts made by countries neighboring and adjacent to India. But it must be said that they have been able not to fool a single person, and the country has stayed together irrespective of numerous challenges that are faces our life today. And people have realized that without this water, there will be difficult for survival. And even if that water is present, it will be a challenge to process and protect and conserve this water, because other communities which are not associated with may not be able to use the water resources. India's huge water resources has taken a deep. All major rivers that I have traveled across Kashmir to Kanyakumari are showing decaying health because there is not enough water flowing through this riverine system, and has been extensively used by the increasing population, is a sign of danger. The government needs to work upon and save whatever leftover rivers that we have and the forests that we have, so that India is not only a nation of great virtue, knowledge, wisdom, and traditional faith and religion, but also becomes a very important hub of forestry and biodiversity conservation. And being one of the signatories of the anti-climate change campaign, India has done significantly well along with other countries in highlighting and explaining how climate change has been impacting India and how this could be changed by countries coming and working together.
Various economic trade zones are already available, but one thing that I feel is that it will be important for India to revive the SARC so that the cooperation of the Southeast Asian nation or South Asian nations could prosper. They need to trigger a stronger relationship between ASEAN members or the Association of Southeast Asian Nations that will help in bridging and building a wider gap and bringing ASEAN and SARC economies together or integrate them so that we have big areas of manufacturing, exchanging manufactured product, and also providing orders to the rest of the world by cooperating with one another. So India's fate lies in the hand of the people, and the more we can work hard and understand the vagaries of religious hatred and other delimitations that impact our life, if the people remain united as they have and continue to thrive and move forward, India will continue to be one of the greatest country of the world, and must be said that East or West, India is the best. Thank you so much, Professor Sharma. It has been a pleasure being part of this platform. I look forward again to come back tomorrow. Thank you very much and good night. Thank you very much, Dr. Sakat. Thank you. You all have made the day. Tomorrow we are meeting for India is the best, East or West. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. Thank you very much. Good night.